फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। नमस्ते, जय हिंद एंड वेलकम टू क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट क्रिकेट लाइव। हम चर्चा तो करेंगे लेकिन क्या चर्चा करें, बिकॉज ऑल दैट्स हैपनिंग where there should be cricket action is only rain and lots more rain, even as the day match spilled over into the reserve day and India was supposed to start from 147 to 2, but it doesn't look like it's going to play because the skies have just opened up and they don't seem to be in any mood to shut down. So normally the sky is opening up is referred to in a term that the sun has come out and things are looking better. But here, what I literally mean is that the skies have opened out and it's just pouring. It's just rain clouds quite literally hanging over all over Colombo. We will look at the weather update. Let's go straight across to our guests and friends, cricket crazy friends on this conversation. K. Srinivas Rao, Vidanshu Kumar and Sahil Malhotra with us. Sahil, सबसे पहले तो बताओ अपडेट, क्या पॉइंट शेयर करना ही था तो रिजर्व डे क्यों था यार? What is the point? Reigns have said, listen, all those who felt कि ये cheating है, this is not fair. Look, we balanced it out. I think it's scary right now. Subah, since morning it has been raining. There was a dry spell for a couple of hours in around 10, 11. And then now it's absolutely bucketing down. From the live visuals shared by people who have been traveling for the Asia Cup, I think it's looking scary and it's not looking good. So I don't see कि अब यहाँ पर मैच होने वाला है. अगर हुआ भी तो फिर वो ऐसा होगा कि जिसका होना ना होना एक ही बात है. So looking very disappointing at the moment. अश्विन का ट्वीट देखो, इलैयाराजा सर के गाने, गरम चाय कोलंबो में. Students are requesting ACC to plan their examination schedules. Generally, Colombo people will not have hot chai. They generally have chai in a very different way. They have malt tea. So in Colombo, what's famous is malt tea. So जो हमारा न्यूट्रामोल या बोनवीटा ये है, it's mixed with that. उससे चाय बनती है. So that's how it is. That's why it's called malt tea. अगर चाय पी रहे हैं तो. Otherwise स्टेडियम में तो वहाँ बियर भी अलाउड है. तो those who want to opt for a ठंडा ऑप्शन. द मोस्ट प्रोफेटिक यहाँ पे वेंकटेश प्रसाद रहे. उन्होंने जैसे ही ये शेड्यूल बताया गया था कि इस मैच का रिजर्व डे, उनके कमेंट को अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि दिस इज अनफेयर और मैं तो चाहता हूँ कि दूसरे दिन इतनी बारिश हो, पहले दिन बारिश रुके और दूसरे दिन इतनी बारिश हो कि मैच खेला ही ना जा सके. और बताइए वही हो रहा है. भारत के चांस वेंकटेश प्रसाद आजकल अपने आप को रन अप लेके स्पिन बॉलर भी बोलते हैं और फिर कुछ और स्पिन भी कर रहे हैं. We will steer clear of those spins right now because वो अलग एक मूड में आ गए. ऐसा लग रहा है कि वो फिर he's bowling to Amir Sohail, but right on social media. But let's come back to this match. Let's focus on what we saw, and because right now what we are seeing is rain and covers, but we are also seeing the Indian dressing room. What do you make of the first of what you saw of Rohit Sharma, of Shubman Gill, and also the Pakistan unit on that day? Job is 25. See, we were 122 or something like that in the 13th or 14th over. After that, we slowed down a bit because we lost back-to-back wickets. But Srini, Again, I mean, Rohit's dismissal again, I thought was that minor lapse in concentration, but again, I was just saying this, that just hope. Let's hope. Let's probably think that rain is going to wash away this game. This game is not going to happen. If that is the case, the positive that I take is from the fact that I don't know the last time that the pair of Indian openers saw through the entire first power play in a 50 over game, right? And put a 100-run partnership on board. Okay. Now, coming into this game, the last India Pakistan game was supposed to be like, where you would pick from. And especially Rohit's dismissal to Shaheen Afridi. We looked at it, and there was a lot of chatter around how technically the guy is like at fault in terms of facing Afridi. Okay, although I don't believe that Afridi delivery came immediately after a break, nipped light at the last moment. Kind of Rohit couldn't have done, and
Okay, I mean, he took it a little carelessly. Maybe, I'm assuming. I'm sitting miles away. But what I saw of Rohit yesterday, in terms Hmm. of how he played Naeem, and Yeah. he was careful. See, people are criticizing him for being dicey against Naeem. No, I don't think he was dicey. He was slow. He was careful. He waited. That is exactly what we were talking about in the preview to Hmm. this, that you need to stay back, watch the ball, take your time. This is a 50-over game, not a T20 game. You don't need to go hammer and tongs from the beginning itself. And I Hmm. think you see between the two of y'all, who is the batsman who's probably in that more the kind of rhythm to like let it go. And trust me, once they started off, Pakistan, I think, should count themselves lucky for Hmm. getting that breakthrough, number one, and that rain coming in, number two. Yeah. Otherwise, to me, this Indian top order looked set to party yesterday. If the Hmm. sun would have been out and the kind of beginning that we got, yes, back to back dismissals hurt. But otherwise, I think we were set to See, do, one good thing was to see the flow that was coming in yeah, from Shubman Gill, and yeah, yeah. also beyond the first two, it was heartening. 17 run banaya KL Rahul ne, but he looked comfortable after a long time. Somewhere he seemed to have not just worked out the niggles in his body, but also some niggles in his mind. Chaitanya Nanda is also there with us. Yes, Srini, and then Chaitanya. Yeah, see, I like to make a point here. I now I have my serious doubts. I mean, I would like to say here, and I like a guess, of course, Hmm. but a strong guess that Shreyas was asked to sit out. They wanted to test Rahul. That is I think my strong guess coming out here. I don't know how badly Shreyas was probably injured on the morning of the match. They thought Rahul is here. Here is a game Hmm. to kind of test him, and Hmm. good pace attack. I mean, this is as competitive a game as it could have been. And yes, why I'm Hmm. forced to say this is because coming into this tournament, we were very skeptical about what kind of injury Rahul is taking into this tournament, considering we named a 17 member, 17 plus one member squad. We were Hmm. not sure. That is the narrative that was going around. And from what we saw of Rahul yesterday, I'd like to believe that, somewhere the medical team of the BCCI knows what it is doing. मेडिकल टीम के साथ साथ कोई तो साइकोलॉजिस्ट है जिसने कुछ काम भी किया है ना चैतन्य दैट आल्सो लुक्स लाइक इट कि कम से कम ही लुक्ड अ लिटिल फ्रेश इन हिज माइंड Yeah. and somewhere I keep going back to what Chaitanya said. It was good to see Rohit actually get some lucky breaks, the ball leaving him, बॉल एक अंदर करके आई जो बीच में से निकल गई उसे टेनिस बॉल बाउंस जैसा था, अगली बॉल बाहर निकल के गई, वो एज मिस करके गई, so there was a little bit of a tennis ballish bounce and he was lucky not to get out Rohit Sharma, but somewhere I feel Shubman Gill showed more openness in playing his shots और बड़ा खुल के और without any shackles in the mind. Rohit seemed to have a few shackles early on. क्या लगता है आपको चेतन? आनंद आई थिंक मेरे को लगता है कि शुभमैन को ना ये एक प्लान देके भेजा गया था, एक एडवाइस देके भेजा था दैट ही हैज टू गो एंड टेक अगेंस्ट द बॉलर्स, ही हैज टू बैट अग्रेसिव अगेंस्ट द बॉलर्स द वे ही बैट्स, बिकॉज ही इज गुड व्हेन ही बैट्स अग्रेसिवली, माइंडसेट अगर अग्रेसिव रहता है तो ही लुक्स लाइक अ अग्रेसिव प्लेयर एंड ही प्लेज वेल. बट रोहित शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो रोहित शर्मा को यहाँ पर एक्चुअली लॉ ऑफ एवरेज भी उनके साथ था, बट वो थोड़े लकी भी रहे यहाँ पे. थोड़ा सा अगर आप देखें तो शुभमन भी लकी रहे हैं यहाँ पर, उनके भी कैचेस लगने से गए, टाइम नहीं पकड़ पाए, तो कहीं ना कहीं इंडिया को लक का फेवर था. बट मुझे बोलना होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान ने कल बहुत ही गंदी गेंदबाजी करी, दे हैव बॉल्ड रियली बैड. ओनली सिर्फ नजीम शाह को अगर आप छोड़ें तो उसके बाद जितने बॉलर्स ने बॉल डाली वो बहुत ही खराब थी. और थैंक्स टू शादाब खान ब्रिंगिंग बैक रोहित शर्मा इनटू द फॉर्म, जिस तरीके की बॉलिंग शादाब ने करी है, आई थिंक उस बॉलिंग के ऊपर कोई भी प्लेयर जो फॉर्म में ना हो वो भी फॉर्म में आ जाता, बिकॉज ही हैज बॉल्ड टू फुल टॉसेस, There are टू bad बैड days and बॉल. there are good days. That stands it true for everyone. नहीं 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 शे नहीं, दैट्स ओके, बट यू हैव टू रियलाइज द रियल थिंग. यू कैन नॉट जस्ट से कि गुड थिंग. अगर उसने खराब बॉलिंग करी है और उसने खराब बॉलिंग पे रन Fair बनाए हैं, enough. उससे Fair पहले आप enough. देख रहे थे रोहित स्ट्रगल कर रहा था, बैट पे बॉल नहीं लग रहा था. बट आई हाँ, स्टिल दो छक्के पड़े, वो दो छक्के आई पड़े फील और फिर अगर मूड मैं बदल गया. अगर मैं यही थियरी लेके जाऊं तो पहला और इंडिया और पाकिस्तान का जो ओडीआई था, आई थॉट अंटिल दैट फर्स्ट रेन ब्रेक दैट हैपेंड, इंडिया स्टार्टेड ऑफ ब्यूटीफुली.
It is No, just India that rain started came off and then beautifully, sudden but lapse they of were not look. concentration. No, but नहीं they नहीं were नहीं not looking comfortable. I don't So think so. what बिल्कुल happened? Look They at the both good. highlights. Look at the highlights of the this thing of play, session of play before the rain came in. In the first ODI between India and Pakistan, I'm saying. I think it was There are going on pretty there, smooth. वो break see, हुआ, रोहित वापस आए break से, and that one Shah Afridi, and that obviously you're talking about good days, good deliveries, bad no, deliveries. I think that Afridi No, 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 delivery no. was I think in no. favor. See, I'm just saying Chaitanya believes that Shadab helped Rohit get it, find his rhythm. Rohit was looking a little uncomfortable. That's his yes. point of view. That he was why let him और था वो दो ऐसे full हाँ toss हाँ. पे इतना लट्टू बॉल डाला I'm just यार saying, चाहिए होता इतना है we बैट्समैन don't भी need to दिखता ना pull them down. That's all I'm नहीं saying. नहीं 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 And what I'm saying, बैट्समैन को भी चाहिए होता है ना कि मुझे एक लॉलीपॉप मिल जाए मेरे बैट पे लग जाए और मेरा दिमाग खुल जाए तो ये the होता है same, it's a natural thing which happens and the sometimes you same, are tackled जैसे आनंद sometimes you आपने are कहा था not कि विराट के बैट पे बॉल लगी थी आईपीएल में, and they came back into करेक्ट the form. करेक्ट तो ये वो एक विराट बॉल की होता है कई बार dismissal. टॉप क्लास प्लेयर्स का ऐसे ही होता है कि दे डोंट नीड टू मच ऑफ टाइम टू गेट बैक इनटू फॉर्म इट्स अ मेंटल थिंग मोर देन एनीथिंग एल्स अच्छा या बंसल का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि बारिश रुक गई है कवर्स आर कमिंग ऑफ एंड वी कैन सी इट पीछे से कवर बारिश रुक गई है कवर निकाल रहे हैं तो पिच एसेस करेंगे 45-50 मिनट्स में मैच स्टार्ट होता है कि नहीं देखना पड़ेगा बट एटलीस्ट राइट नाउ देर सेइंग बारिश निकल रही बट दिस इज श्रीलंका एंड दिस इज कोलंबो जब तक वो वहां बाउंड्री लाइन पहुंचेंगे तब तक कहा जाएगा वापस आ जाओ बिकॉज बारिश फिर वापस आ गई तो ऐसा हो चुका है और मैं प्रत्यक्ष उसको देख चुका हूँ आई हैव सीन दैट हैपन आल्सो 2008 2009 when I was in Sri Lanka I've seen this they said oh rain has stopped remove the covers but the groundsman said wait and the umpires were saying remove the covers why aren't they? I said wait and then the third time the umpire match referee said remove it now he got angry and they started lifting the cover and it started raining again so groundsman said see I told you so these fun things happen but Vidanshu your thoughts we'll get to the off the field issues after we quickly talk about on field what did you think are you happy with the way KL Rahul looked in his 17 runs are you See, happy yeah, one thing that one looks at a batsman who is coming out of a long layoff is how well they are moving, the feet movement in particular. And I thought that Rahul was fluid. वो वैसा नहीं लग रहा था कि बहुत जबरदस्त इंजरी के बाद वो फंस के खेल रहे हैं जो भी हमने कल थोड़ा सा देखा उनका 17 रन जो उन्होंने बनाए मुझे लगा उनकी जी फीट अच्छी तो उनका जजमेंट भी अच्छा हो रहा था और फिर बाद में उन्होंने आई थिंक आखिरी ओवर में एक बढ़िया चौका भी लगाया था जिससे उनका उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा ओवरऑल इट वाज वेरी गुड टू सी राहुल प्लेइंग लाइक दैट एंड जिस तरह से वो खेले हैं अब क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर है आपको अब उन्हें ज्यादा से ज्यादा खिलाना पड़ेगा आप शायद ये भी नहीं सोच सकते हैं कि इसको हम अब हमने देख लिया हाँ ये अच्छा खेल रहे हैं और अब हम वर्ल्ड कप के समय में या बाद में अब आपको राहुल को हर मैच में खिलाना होगा और तभी आप वर्ल्ड कप की बुराई कर सकते हैं एक तरह से एक आपकी टीम के लिए डायलेमा भी है बट दैट इज हाउ इट इज रोहित शर्मा ने बिल्कुल शादाब उनको फॉर्म में उन्होंने वापस आने का मौका दिया 4 छक्के लगे उनको शाहीन शाह अफरीदी भी ने दोनों साइड से बॉलिंग करने की कोशिश की ओवर द विकेट राउंड द विकेट ही वाज नॉट इन हिज बेस्ट मुझे लगता है जो भारतीय क्रिकेट का बेस्ट डिस्प्ले हो सकता था जो वो दिखा सकती थी वो उन्होंने दिखाया है और अभी अब फिर से देखिए शाहीन शाह अफरीदी के बारे में एक बात है कि ही इज अ वेरी गुड फर्स्ट स्पेल बॉलर तो ये कैसा वनडे मैच है यहाँ पे उनको 2 फर्स्ट स्पेल मिल रहे हैं फिर दूसरे करेक्ट फर्स्ट वो फिर देखो से पहले फर्स्ट स्पेल में तो सुताई हुई है अब दूसरे फर्स्ट हाँ स्पेल में क्या होता है देखना पड़ेगा हाँ अच्छी सुताई हुई है ऐसे ठक ठक करके मारा उसकी टुकाई हुई है लेकिन आई थिंक उसका मैं कुछ एक इंटरव्यू देख रहा था तो ही वाज आल्सो सेइंग दैट ही डिपेंड्स अ लॉट अपॉन द कैप्टन्स एडवाइस आल्सो हाउ टू बोल टू द इंडियन प्लेयर्स हर बार वो आगे नहीं कराते हैं अगर उससे स्विंग नहीं हो रही है तो वो लेंथ पे खेलते हैं बॉल अंदर कराने की कोशिश करते हैं वहां पर भी उनको परचेस मिलता है one good thing is that the Pakistani bowlers listen, perhaps not just listen to the captain, they bowl to a plan कि भाई यहाँ मुझे ऐसी बॉल करानी है तो मैं ऐसे ही कराऊंगा ये बॉलर ऐसा कराऊंगा there are some of them who have their bad days कि भाई मैं चाहता तो हूँ कि वहाँ पड़े कहीं और पड़ जाती है that's okay and Shadab didn't deserve that wicket of Rohit Sharma I think I agree with KSR when he says it's a minor lapse in concentration and you could see the anger within Rohit himself that he was so upset with himself for getting out like that because that was not a wicket that he should have given away after especially after getting to where he had but साइली ऑफ द फील्ड जो चल रहा है आज जो ट्रेंड लाइंस हैं इंडिया पाकिस्तान भारत पाकिस्तान की जो मैच है उसमें सब कुछ एशिया कप और फिर बीसीसीआई को लेकर काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है कि भाई बीसीसीआई के ऑफिशियल्स पाकिस्तान जा सकते हैं लेकिन इंडियन टीम नहीं जा सकती ये एसीसी में ये वेन्यू चूज किसने किया वाई डिड यू चूज कोलंबो वाई डिड यू चूज श्रीलंका जब आपको पता है यहाँ बारिश होती है
So there are a lot of conversations around this that's going on. Yeah, fair enough. Everyone has the right to say that, or even we as spectators, just leaving the journalist side aside, even we as spectators have been very frustrated. My 2 weekends have been spoiled. मैं 2 weekend लगातार फ्रेंड्स के घर गया हूँ, खाना ऑर्डर करा है, बारिश देखी है, घर वापस आ गया हूँ. And it has been very frustrating for everyone. But see, the options at hand were UAE. So UAE was your option, and then playing in that heat, 100 overs before the World Cup, I think that was too risky a call to take. So they didn't really have those options. And see, playing against Pakistan in Pakistan is something which is beyond my pay grade right now to even comment on, because higher forces are at play when decision comes to going to play in Pakistan, sending a team to go and play there. If things change after the next general elections, we never know about that. But as things stand, that is not going to happen, right? So we shouldn't even debate about going and playing there. But आपका option UAE था, और UAE के अंदर जो जय शाह का statement आया last week, उन्होंने बहुत, yes, Srini, please. See, this is very clear. This is like, आप पीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन ट्वीट एनीथिंग. वो ट्वीट करने से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता. एट द एंड ऑफ द डे देयर आर अ सर्टेन बंच ऑफ पीपल सिटिंग इनसाइड अ रूम टेकिंग अ कॉल. It is very clear India is not going to go to Pakistan. Mr. Najam Sethi or Zaka Ashraf, they know it. In hindsight, you could have said that, okay, we will not come to India to play the World Cup if you don't come here to play the Asia Cup and all that. You say it, no, but you can't afford to say it. I don't want to get into that. Point being, India will not go to Pakistan. Not now. Next year in the Champions No, Trophy no, is no. also But India will not go. the conversation So point that is, I'm was the not saying that solution. Indian team should go. What I'm saying is कि the question that's being asked is कि BCCI वाले तो जा रहे हैं, BCCI वाले क्यों जा रहे हैं? No, 1 second. और फिर वापस आके ट्वीट भी कर BCCI रहे हैं कि वाले अरे जा रहे हमको हैं. तो बादशाह की तरह ट्रीट किया, we were treated so well, ये था अब वो था. वो और अब वो क्या है, आपको एक डिप्लोमेसी रखनी पड़ती है. आपको वहां पे जाके, आप किसी और के देश में गए हो, वहां पे जाके आप ये तो नहीं बोल सकते कि आई डिडंट वांट टू कम हियर, बट ऑब्लिगेशंस फोर्स मी टू, बिकॉज नेक्स्ट ईयर द वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी होस्टेड हियर. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स आर गोइंग टू कम हियर. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रेसिप्रोकेट. बट प्लेइंग क्रिकेट इज कंसर्न, BCCI is very sure that Indian team will not go to Pakistan. Whether it is right, wrong, I'm not getting into the ethics, morals of it. That is their decision. And that is obviously where they are coming from. This is not even in BCCI's hands. This is not so even BCCI's I'm call just to saying, take. correct, not just The that. important But, bit is here, yeah, why was the tournament shifted to Sri Lanka? Sri Lanka, correct, Now, that correct. I'll come to. मुद्दे की बात वही है. It could not have been held in UAE for two reasons. Number one, obviously, with UAE Cricket Board, also there is politics at play. Now, these are underlying politics. Okay, this goes on throughout the year for the longest time. There is politics at play. If I go into it, it's a completely deep chapter. So there is, India has never said no to UAE all this while. IPL, that was कोविड में India's तो वहीं go-to पे खिला. destination. But now things are changing, equations are changing, accordingly, relationships are changing. That was one. Second, more important is, I heard कि पिछला एशिया कप तो आपने यूएई में खेला था, तो प्रॉब्लम क्या है? पिछला एशिया कप T20 था, ये वाला एशिया कप 50 ओवर है. आपको 9-10 घंटे निकालने हैं फील्ड पे. आई कैन टेल यू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट द इंडियन टीम मैनेजमेंट was not very comfortable playing there in that 50-degree atmosphere. They were not very comfortable. They did not want to. And BCCI obliged the Indian team management. And BCCI said, fine, if UAE में धूप है तो है, uncomfortable है तो है, नहीं जाएंगे. Then is where Sri Lanka put its hand up and said, we would like to host. The ACC agreed. Every member of the ACC voted in favor of it. Pakistan Cricket Board then chose for a hybrid model. Listen, they're not going to make any money out of that, those matches being played in Pakistan. Stadiums are empty. It's not even going to sell on TV. The real matches, the important matches, are the ones involving India, and they are all held in Sri Lanka. So, what PCP did by saying to the world that, listen, we have bargained our share of, whatever matches we'll hold it under a hybrid model. That is only to show to their public and appease them, the saying that, listen, we are not completely losing the plot and the narrative here, because they need to do this today, because next year they have to come to India to play the World Cup. That is the reality of it. Everybody was in agreement. Today on Twitter, तमाशा आप बना दो BCCI का और जय शाह का.
आप तमाशा बना रहे हो, आप उसके सर पे आप you put this all on it. Am I saying Jay Shah is the finest administrator this game has ever seen? No, but poor fellow, I mean, he's taking the wrath of all this nonsense that is going on as if it was Jay's decision alone to Sri Lanka में जाके खेल लेते. But he's the head of the ACC, and He's the that's head why of he's his. come. So So, fair enough. He has the, to take. He has to live with it. I'm yeah, not saying yes, the he has to live with it. platform. But I don't think Those who have I don't decided to go after somebody, they want somebody who's got no to no be the live punching with bag. it. So today, Maro, आप गाली today मारो is BCCI. See, as it is abusing BCCI is a bit fashionable. I do understand that. correct. And abusing Jay, it comes with. I've told this to like many people in the past also. Jay is not the only BCCI chief who's getting the flag. There is no BCCI chief जिसको Who's not गाली got नहीं the flag? पड़ी. और शरद Correct. पवार ने भी गाली खाया है, जगमोहन दालमिया ने भी गाली खाया है, एन श्रीनिवासन ने जितना गाली खाया है शायद किसी ने नहीं खाया है. तो गालियां सब खाते हैं. ये बीसीसीआई का जो भी उस कुर्सी पे बैठता है वो गाली खाता ही है. द It comes with the रियलिटी kursi. इज द रियलिटी इज that every stakeholder involved in the Asia Cup had agreed for this to Hmm. happen. Yes, the one question that I want to ask and for which I still don't have an answer is why not Hamman Tota? Hmm. That question I don't have an answer to. I think I have an answer, but I can't go on camera and It's, say it because I yeah, don't know. it's beyond the realm of cricket, but there is another dimension to that also. But the fact is that the importance of an India-Pakistan match is shown when the ACC themselves decide they want a reserve day for this, and no other nation is cribbing, because that's the Exactly. amount of money. It's the commercials. It's about money. So if India were to go to Pakistan, imagine we're actually a nation that is going bankrupt. It's like as if giving them an extra lease of life at a time when they don't want to. There is a strategic reason. It's not that other sporting teams have not gone. Other sporting teams have gone. The bridge team has Anand, gone. Volleyball teams have come. Everybody's come, but it's not a Anand, money spinner. It's the whole deal. It's the spotlight, the money, and also the soft power that cricket enjoys. So it's a larger issue and a and a much bigger issue there. And sometimes those issues take precedence over. It's just a game. Let's treat it as a game, because it's not just a game. It's much more than that. The way cricket's dynamics are. But coming back to this, Anand, one quick thing. ah, One hmm, quick thing. Next hmm, year's Champions Trophy will also go out of Pakistan. correct, And this is not just India that is going to say, we don't want to go. It will be a collective thought process, which is correct, happening right now. I mean, correct, it's just that people are going to wake up to this closer to the tournament. No, correct. sorry, not next year, 2025. Hmm. Correct. See, action somewhere lead to a certain amount of reaction, and yeah, in certain cases, it's unfortunate that politics and geopolitics comes into play, but there is a lot more at stake. This is a nation that has chosen, to wage a war over peace, and then you can't play, shake hands with one and stab with the other. And this is a serious dynamic and a huge dynamic, and a lot of opinions are split on that, but it's because of the money that's riding on it. Let's come back to this and say कि आज अगर मैच होता है, आज अगर गेम होता है, आपको लगता है ये अप्रोच ठीक है? आपको लगता है कि द इंडियन टीम हैज अ प्लान? देयर वाज फार मोर इंटेंट देन इट वाज. बंसल बोल रहा है कि कवर्स आर बैक ऑन, रेंज हैव स्टार्टेड अगेन. मैंने नहीं कहा होगा. ये कोलंबो है. ये नहीं कोलंबो होगा. है भाई. ये कोलंबो है. कवर उतार के बाउंड्री लाइन पहुंचने से पहले वापस लगेगा कवर. मैं कह रहा हूँ अभी अभी सारे कवर बाउंड्री लाइन पहुंचाए होंगे, अब फिर वापस लाके लगाएंगे. That's exactly what I tweeted. I said, tweet I'm putting out, covers are coming off, tweet in my draft, covers are coming on. Go here, go here. So that's how it is. But what happens to the Asia Cup then? This, because there are 5 or 6 nations who are going to be participating in the World Cup, who would be looking for it as practice. Right? There are more matches. India has to play Bangladesh. There is Sri Lanka. So there are other matches also with Hanshu. But आपको लगता है ये ill timed है? वेरी मच इल टाइम्ड है एंड बाकी मैचेस भी कितने कंप्लीट हो गए वी डोंट नो. कल के मैच में सीरियस डाउट अभी हो ही चुका है, वो भी इंडिया का ही मैच है, तो मे बी उस तरह से इंडिया शायद फाइनल पे भी ना पहुंच पाए, मैच ही नहीं रहेगा उनके पास. तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इल कंसीव्ड इन रीसेंट मेमोरी. इससे खराब टूर्नामेंट नहीं याद है मुझे. एक श्रीलंका का ही टूर्नामेंट याद है. आई थिंक इट वाज अ बायलैटरल इंडिया श्रीलंका 2006 या 5 विल रिमेंबर, जो पूरा सीरीज वॉश आउट हो गया था. उसी टाइप की एक सीरीज हो रही है जिसमें एक भी बॉल नहीं फेंकी गई है.
यहाँ पे तो खैर हुए हैं कुछ मैचेस हुए हैं, आई थिंक एब्सोल्युटली शैम है कैलेंडर टाइट। और यहाँ पे एक जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एशिया कप 50 ओवर्स का एशिया कप की जगह है? हम जितने लीग्स देख रहे हैं, क्यों नहीं ये सही टाइम पे हुआ? इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना। आपके पास पूरे दुनिया भर के लीग्स हैं, आईपीएल है, ऑस्ट्रेलियन लीग्स हैं, आप बांग्लादेश के लीग्स, श्रीलंका के लीग्स। दिस इज द फ्यूचर। एशिया कप और सारे आप चाहेंगे कि सारे लीग्स भी हम खेले और एशिया कप भी खेले और वर्ल्ड कप्स भी खेले और 20 ओवर्स के भी वर्ल्ड कप्स खेले, उनके भी एशिया कप्स खेले। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, एंड दिस इज probably a step towards that only कि आप देखेंगे the relevance of Asia Cup because Yeah. ये इस शेड्यूल हो रहा है, इसका मतलब हायरार्की में ये बहुत ही नीचे है। It is not there on the pedestal at all। और हम लीग्स क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ। और इसका आंसर भी आपने अपने पिछले ही क्वेश्चन में दे दिया था, तो यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, बट इट इज अबाउट, इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ मीडियाटाइज्ड, ग्लोबलाइज्ड, टेलीवाइज्ड इवेंट जो इसको सेल किया जाता है। इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसी है जो कि आप देन आपको ये इंडिया पाकिस्तान एशिया कप का मैच बहुत नीचे नजर आता है कंपेयर टू many other things जिन्होंने इसके ऊपर प्रेसिडेंस ली है। तो we have to have a hard look at this also and see how much of cricket we can have। अभी एशियन गेम्स होगा, एशियन गेम्स हमारे लिए तो बहुत बड़ा इवेंट होता है। वहां पे क्रिकेट की कैसी टीम जा रही है, क्या खेलेंगे, किस तरह से खेल के आएंगे, क्या वो मेडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, क्या ये रोहित शर्मा की टीम वहां नहीं जा सकती थी? ये सारे क्वेश्चंस का वही आंसर है जो आपने अपने पिछले No, but Asian Games में एक rule है. The Asian Games, one of the things, underlying things is that you have to have people who are amateurs and not professionals. So that is one aspect, and you should not be part of the current national team. तो आपने वहीं पे अपने आप को डिस्क्वालीफाई करना है। यू वांट टू बी प्रोफेशनल, नॉट अ एमेच्योर विनिंग एट द ओलंपिक्स और एशियन गेम्स। वहीं पे यू हैव मेड द सेपरेशन देयर। So my point is actually taken. No, but Vidhanshu, that separation is being made across sport, right? Yes. There are across sport and multilateral sport, except for certain exceptions like in tennis, where players come up and say, no, we'll play for the country and we want to do it for the country, and they play without a fee and all of that, and they don't have they drop their entire professional stuff. Other than that, largely most sports, that's what happens. Look at boxing. In boxing, if you turn pro, you can't play in the Olympics, you can't compete in the Olympics or the Asian Games. That's how the name of the game is. Football. So I'm just saying. Football is a classic example. Yes, true that. So this is the answer to all the questions that we're looking at. Ill conceived क्यों है, ill timed क्यों है, इन सब का आंसर एक्चुअली उस गेम के इकोनॉमी में ही है, and that's why we are having this, and that's why maybe we have to take a decision also. By we I mean the boards and the management. Maybe they have to take it. Do they want a sham like this to happen again and again, or do they want probably do something with there has to be a way to share the money or share the spoils with the Asian bloc to keep them together on the world stage so that they get the vote. So that's again a BCCI politics and BCCI. This one that wheels within wheels also comes into play. चेतन नंदा बोल रहा है यार क्रिकेट की बात करते हैं, ये सब क्या बात करके बैठे हैं, मैं बोर हो गया हूँ। बट पॉइंट इज चेतन भाई, क्रिकेट पे क्या बात कर रहे हैं? अभी 2 दिन से हम वही 147.2 पे अटके और सिर्फ बारिश ही बारिश है। अब आपको एक चीज करना है, आप काउंट करो कि कितनी बूंदें गिरी है। उसका वो बारिश की बूंदों का स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा कि कितनी पिच में गिरी है। हाँ जी जी, क्योंकि अगर आप देखें तो राहुल, अभी तक हम कह रहे हैं कि राहुल प्लेड वेरी वेल, द 25 बॉल्स एंड ही हैज स्कोर्ड 17 रन्स, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें एक चौका उनका बैकफुट से और एक लात पे बॉल गिरा, उससे चौका है। As a bowler, if I am the bowler and I know he's coming from a niggle where he has a tendon break in his knee, I will like to join on the front foot rather than sending him back and standing in the crease. तो ये एक टैक्टिक्स होंगी जो हमें देखनी होंगी, समझदार टीमें करेंगी। मैं कह रहा हूँ कल जो पाकिस्तान ने किया है, आई एम लिटिल सरप्राइज्ड। इट वाज लाइक somebody who doesn't have teeth and came to eat food, you know, so they cannot chew right now the way they bowled। अब बार में आपको शाहीन को बोल रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी एक बहुत प्लानिंग से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब इजी प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं जब वो बॉलिंग करते हैं। आप कल भी देखिए, उन्होंने आगे सिर्फ इंस्विंग डालने का कोशिश किया है। लास्ट मैच में भी जब वो पहले बॉलिंग कर रहे थे तो रोहित अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने लेंथ को जब पीछे किया, देन ही हैड दैट बोथ साइड ऑफ मूवमेंट, देन ही गॉट लिटिल वरीड। अगर आप कल नजीम शाह को देखें, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग करी, उन्होंने राइट लेंथ पे बॉलिंग करी थी। सो वी आर वेरी हैप्पी राइट नाउ व्हाट इंडिया स्कोर इज, बट एज ए क्रिकेटर आई स्टिल फील दैट पाकिस्तान bowled badly rather than we batted very well।
Very We well. have taken them to the corners, every corner of the park. We should not say, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे प्लेयर्स की तारीफ नहीं करूंगा. They have done very well because अगर खराब बॉलिंग करी है तो उसको उन्होंने अच्छी बैटिंग करके उनकी बॉलिंग को बाउंड्री पे पहुंचाया भी है, what they deserve. But एज ए Yeah. पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान मैनेजमेंट बैठा हूँ तो मैं बोलूंगा कि दैट यू हैव नॉट बोल्ड वेल एट ऑल. सिर्फ एक नजीम शाह थे जो लग रहे थे कि कोई बॉलिंग कर रहे हैं उस विकेट पे. ही वाज अनप्लेएबल. अगर आप सोचिए उसी के साथ अगर एक जना और अच्छी बॉलिंग कर रहा होता, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम. अगर वो कैचेस भी पकड़ी जाती तब भी डिफरेंट होता. तो आई स्टिल फील दैट रोहित इज नॉट रोहित व्हाट वी हैव सीन हिम इन द पास्ट. अभी भी मैं उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. आई वांट टू सी हिम टू कंटिन्यू दिस फॉर्म विद अ गुड बॉलिंग अटैक, ना कि शादाब खान ने कल अगर आप देखें उससे पहले जब वो बॉलिंग कर रहे थे, ही वाज बॉलिंग विद द सीम, द बॉल वाज कमिंग विद द सीम, इट वाज गेटिंग पिक्ड, द बॉल ही गॉट आउट. रोहित शर्मा वो क्रॉस सीम बॉल पकड़ा था और उन्होंने उसको टॉप स्पिन फेंका एंड रोहित पिक्ड हिम अप एज ए लेग स्पिन एंड ही ट्राइड टू वेंट ओवर द कवर्स, बट वो बॉल सीधा रहा, इसलिए वो बॉल कवर्स के ऊपर ना जाके मिड ऑफ की तरफ चला गया. तो वहां पे वो लॉन्ग ऑफ का कैच आउट हुए. तो यू नीड टू सी ऑल दिस थिंग्स. अगर हम शुभमन की बात करते हैं, शुभमन भी जब नदीम शाह को खेल रहे थे तो इतने कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे थे. शुभमन नहीं दे रहे थे. सिर्फ उनकी अगर आप उनकी शॉटें देखेंगे तो शाहीन अफरीदी ने सिर्फ मुंह पे बॉलें फेंकी है. अगर एक चौका जब उन्होंने मारा शाहीन अफरीदी को शुभमन गिल ने कवर्स के ऊपर एयर में था, कवर्स के साथ से गया, तो अगर आप वीडियो देखें तो इफ्तिकार के ऊपर कैमरा गया और इफ्तिकार रिजवान को कह रहे थे कि शाहीन कर क्या रहा है, मतलब ऐसे करके गेंद फेंकी, मतलब दे वर टॉकिंग टू ईच अदर. So if you see yesterday's bowling of Shaheen Afridi, it was not touching, it was not going above 140. It was between 135 to 139, and those were all bowled just straight to the bat. It was not swinging, it was not doing anything. जो outfield है वो lightning fast था. तो ऐसे अगर आप एक चीज देखें तो they have done well, they have scored well. 100 रन की पार्टनरशिप हुई, that is very good sign. They spent time on the wicket. और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया को 2 बार पाकिस्तान अटैक को खेलने को मिला है. एक तरह से मैच प्रैक्टिस मिली है मैच के अंदर, मैच कंडीशंस में. बट आई स्टिल फील we are not batting that great what we should be. And for Rahul, I still have to wait before giving any my judgment because I have not seen him playing on the front foot, getting him on the front foot and play a longer inning. I want to see that. पर एक बात बताओ, शादाब खान उनको फ्रंट फुट पे कवर ड्राइव कराए 5, 6, 10 और उनको भागने के लिए मजबूर करें, उनको बाउंड्रीज ना दें. ऐसे एक्चुअली जो टीम्स होती हैं वो ऐसे प्लान करती हैं बिकॉज वो निकल के बाद आ रहे हैं. लेकिन जो श्रेयस अय्यर ने बैटिंग करी थी पहले मैच में, दैट वाज सुपर. वो उसको कहते हैं बैटिंग कि वो आया, उसका हर बॉल ऐसे लग रहा था जैसे कि टक मिडिल पे. नेवर बीन आउट ऑफ द गेम. these players are not looking like that. अगर आप देखें रोहित भी और उसको आपने बिठा दिया, उसको आपने इस मैच में बिठा दिया ये कहकर उसको चोट लगी है. हाँ, बिकॉज ऐसा सोच रहे हैं हम, ऐसा सोच रहे क्या चोट लगी है, कैसे चोट लगी, मैच के दिन सुबह कैसे चोट लग गई. अब ऐसा है कहीं इस टीम में इतना तो नहीं हो गया, लालच हो गया कि भाई केएल राहुल को तो खिलाना है, ईशान किशन को भी खिलाना है, तो किसको बिठा दे. मैच कब शुरू होगा पूछ रहे मोहम्मद अली, हमें भी नहीं पता, सिर्फ बारिश ही बारिश हो रही है और कुछ नहीं. मैच नहीं शुरू होगा अभी फिर कवर आ गए हैं, अब तो लग गए फिर से, अब लग रहा है फिर रुक गया. अब आधा कवर्स लगे हैं, पूरे नहीं लगे. Someone wrote it very well कि कल जहाँ पे मैच रुका था वहीं से बारिश फिर आज शुरू हो गई, जहाँ से मैच शुरू वहीं से बारिश शुरू हो गई. आज मैच वहीं से शुरू होगा तो बारिश भी वहीं से शुरू हो गई. श्रीलंका, मोहम्मद इकरामुल्लाह ने लिखा है, बात सही लिखा है. लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वहाँ आई थिंक इफी है सर. मुझे लग रहा है अगला कम से कम 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही दिख रहा है. पर एक बात बताइए, आज अगर मैच होता भी है तो कल इमीडिएटली वी आर प्लेइंग बैक टू बैक श्रीलंका. यस. तो क्या हम लोग को ऐसा लगता है कि श्रीलंका रिजर्व डे नहीं है? हाँ, और श्रीलंका इतनी ठंडा, इतनी खसी टीम है कि हम लोग 2 दिन खपने के बाद फिर से बिना रेस्ट के हमारे प्लेयर खेल सकते हैं. सब मायने नहीं रखता ना. किसी ने मुझसे पूछा सर विल इंडिया मेक इट टू द फाइनल. मैंने कहा अभी जो फाइन धुल रहा है मैच वो फाइनल ही तो है. So Anand, I want to add here, अभी हम जितना एशिया कप का बात कर रहे हैं बारिश, we need to look at the larger picture. This was the only game time we had in hand.
इसके बाद we just have 3 ODIs and we are looking to play a World Cup where our players coming from injury are not even getting a proper hit in the middle. There is no game time at all. मतलब आप कितना what Chaitanya was saying was absolutely right. आयरलैंड में तो गेम टाइम था, तब तो आपने T20 वो खेला। से बुमराह नहीं नहीं 8-12 वेस्ट इंडीज में भी गेम टाइम था, तब आपने ज्यादा T20 खेली, कम ओडीआई खेला। तो आपको वहां ओडीआई खेलना ही था तो तब भी एक्सपेरिमेंट खेल कर रहे सकते थे थे। ना, वहां तो रोहित और विराट बैटिंग नहीं करने आए। ओडीआई खेलना था तो तब तो खेल सकते थे। आपको गेम टाइम वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले गेम टाइम याद आ रहा है? 2 साल क्या कर रहे थे? But I think पूरा सर्कल के अंदर probably we are the only team who haven't had a good game time with the entire squad. England, New Zealand are playing, Australia, South Africa are playing, Pakistan, Afghanistan have played a series, Sri Lanka have had good practice under their belt. हमारा squad ही ऐसा है कि आता पता ही नहीं कौन कहाँ खेलने वाला है। और कल केएल राहुल वाला मतलब चैतन्य बीइंग अ लेग स्पिनर खुद ही मतलब वो जो पॉइंट उन्होंने मेकअप करा कि फ्रंट फुट पे राहुल को खिलाते, राहुल का अगर शादाब का पहला बॉल आप देखोगे जो वो फ्रंट फुट पे खिलाया, पीछे से रिजवान का आवाज आया था, अरे ये तो फंस गया था। वो फ्रंट फुट वाली पहली बॉल के ऊपर ही वाज हाफ हार्टेड कि ड्राइव करना था, रोकना था, बट उसके बाद तो सिर्फ डॉलीज मिला ना, सो ही वाज कंफर्टेबली गोइंग ऑन द बैक फुट एंड जस्ट नजिंग देम हियर एंड देयर। करेक्ट। अब देखो हम लोग ने सब कुछ देख लिया। हमारे जो टीम के अंदर थिंक टैंक हैं, जिनके पास कम से कम 15,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन हैं, तो इतना ज़्यादा ओहदा उनका स्टैचर है कि वो कीप करते हुए, बैटिंग करते हुए सब कुछ कर चुके हैं और कैप्टन भी बन चुके हैं। 17 बार उनके पास रिकॉर्ड नंबर ऑफ चेजेस, विंस वाइल चेजिंग है, सब कुछ है उनके पास, है ना, हमारे जो कोच हैं। और उनके साथ जो बैठे हैं वो भी नामी गिनामी प्लेयर्स हैं, उनके पास भी हमसे ज़्यादा तो क्रिकेटिंग एक्यूमेन होगा। प्लस जो कैप्टन है, जो कैप्टन रह चुका है, जो बॉलर है, सबके पास हमसे ज्यादा अकल होनी चाहिए, क्रिकेटिंग अकल। फिर भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं, तो गड़बड़ कहाँ है? ये अभी हमारा मिस्टीरियस पजल ये है कि ये गड़बड़ हुई कहाँ पर है। बिकॉज आई एम सेइंग नेपाल हैव प्लेड 50 गेम्स देयर, Pakistan has played 31 games. Nepal has played 50 plus games. They are getting into the World Cup after doing some phenomenal work. Australia has played more games. Look at their players. Look at their shape. Look at the South Africans. Look at their players. Look at the West Indies. They are 9 different countries. 9 अलग अलग देशों के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज बनकर खेल रहे। They still look in better shape. And you know, Anand, look what game time has done to Australia. Manas Labuschagne wasn't part of the Australia's ODI World Cup. वो कंकशन सब्स्टिट्यूट बन के आया, 80 करा, नेक्स्ट मैच में 100 कर दिया, एंड ऑल ऑफ अ सडन कैम ग्रीन जो कंकशन के चलते बाहर हुआ था, नाउ यू हैव अ Labuschagne ready who is in good touch, but India unfortunately don't have that luxury where you even have the current lot in good touch. वहां ऑस्ट्रेलिया का तो बैकअप भी तैयार है Labuschagne में। यहाँ पे जो जिसका गुड टच होता है उसको हम बैड इंजरी करके बाहर बिठा देते हैं, और जिसका निगुल होता है उसको गुड प्लेयर करके अंदर खिला देते हैं। उस पे आई वुड लाइक टू डिसएग्री। मतलब वो तो जो टीम शीट दिखा था उस पे 10 का निशान था कि श्रेयस का नंबर कटा है और राहुल का डर है। तो अब ये तो चैतन्य खुद भी सिलेक्टर रहे हैं, उनको पता है कि टीम शीट पे जब एंड मोमेंट में कटता है तो मतलब लास्ट मोमेंट पे वो चेंज हुआ था। सो वो मुझे लगा कि वो लास्ट मोमेंट में, तो वही है। तो जो कह रहे हैं हैरी ब्रूक एज वेल फॉर इंग्लैंड, आई एग्री, बट मैं वही कह रहा हूँ कि अगर लास्ट मोमेंट पे नाम कटा है, यानी कि जो इसका टच अच्छा दिख रहा था उसको आपने बाहर बिठा दिया, जिसका कोई टच ही नहीं है, जो खेल से ही टच में नहीं रहा, उसको आप अंदर लेके आ रहे हो। ये हमारी प्लानिंग है, फैंटास्टिक प्लानिंग, और भी नंबर 4 पे। finger to this, if we had to put a finger to where this the mess actually lies, is that you haven't seen this combination play a lot of ODI cricket. In the recent past, that actually I think all the confusion that we are looking at now eventually stems from there कि इस bunch को in this particular order, किस order में वो भी confusion ही है, मतलब but वो bunch को हमने ज्यादा खेलते हुए ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं देखा है in recent months. Sure. That is where the mess kind of emanates from. One of the oldest teams in the last decade and a half to represent India at the World Cup. One of the most inexperienced teams in the last decade and a half to represent India at the World Cup. One of the most inexperienced captains, the most inexperienced captain to lead India in the last decade and a half at a World Cup. These are all statistics which the numbers will back us. That's the reality. So, by default हमसे ये कहा जा रहा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन वर्ल्ड कप में उम्मीद मत रखो। जो मिलेगा वो बोनस है, जो मिलेगा वो बोनस है। जीतेगा भाई जीतेगा बोलने से पहले खेलेगा भाई खेलेगा है, उसके बाद आगे जाएगा भाई आगे जाएगा है।
नहीं, लेकिन कितना खेलेगा? How many more one-day matches does this Indian team and the setup to play? No, अरे वो तो Three. वर्ल्ड कप में This खेले. is at 3. Mohali, Indore, Rajkot. Once in 4 years. दिस इज द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप यू लुकिंग एट. इसके पास कोई Yeah, 50 ओवर वर्ल्ड कप नहीं होगा. very much. So Indian last team is 50 actually looking ahead in मतलब time. अलग लेवल पे ही है. तो आप 50 ओवर वर्ल्ड कप में टाटा भाई में बोल दे कि खत्म. दिस इज द लास्ट. It's not This is going to the be in this way. नहीं नहीं, 50 I ओवर also एशिया agree. कप है ना, 50 ओवर नहीं वर्ल्ड कप 50 नहीं. ओवर वर्ल्ड कप. अच्छा, वर्ल्ड कप. लास्ट वर्ल्ड कप. लास्ट वर्ल्ड कप. मैं आज ये रिकॉर्डिंग बाजू रख देना. वी विल मीट इन 25 26 एंड डिस्कस दिस अगेन. दिस इज द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप. तो देन इट विल बी द लास्ट 50 ओवर एशिया कप आल्सो. हाँ 50 ओवर 50 वर्ल्ड कप ओवर ही एज नहीं अ है तो फॉर्मेट. फिर एशिया कप एशिया खेल के कप क्या तो हो करेंगे? सकता है. दिस इज द लास्ट एनी एशिया कप एक्चुअली. बट 50 चलो भाई, ओवर एक काम वर्ल्ड कप करते दिस हैं. इज एक दिस काम इज द There will करते be हैं. changes in इससे पहले format. कि और भी भविष्यवाणियां हो जाए, हम यहाँ पर एक विराम ले लेते हैं. वहां बारिश विराम लेना रहे, हमको यहाँ एक अल्प विराम देना पड़ेगा. We'll catch up again if there is some game time that we get to see. We'll try and catch up very soon. पकौड़े लेके बैठते हैं. 6:30 बजे आ जाइए. हैं? पकौड़े चाय और पकौड़े लेके बैठते हैं 6:30 बजे. Done. अच्छा आइडिया. चलो जी, बाय बाय बाय. Bye-bye. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें, या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस, या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म. क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.